Text 2, Reflections on the Reawakening of the East. This was written by Bertrand Russell. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि when I started teaching मेरे सामने Bertrand Russell, ज़ाहिर है मैं भी पढ़कर उसमें से गुजरा हूँ, but interesting इसलिए because I never thought कि there would be time when I would teach any sort of excerpts from Bertrand Russell's essays, because he's by far one of my favorite authors. अच्छा जी, let's read it the way it is. Textual जो writings हैं उनको उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा. One of the most outstanding writers and thinkers of our time, Bertrand Russell was born in 1872. He inherited an earldom but did not make use of his title. Before becoming famous as a writer, he was an eminent mathematician and philosopher. Beginning with Principia Mathematica, he has written many books on philosophy and mathematics. His more popular works have been notable for their introduction of scientific attitudes into the discussion of politics and sociology. Since the Second World War, he has been greatly preoccupied with the nuclear threat to mankind and has been a warm advocate of technical aid to Asian countries. His recent books of general interest include New Hopes for Changing World, The Impact of Science on Society and Human Society in Ethics and Politics. अच्छा, जिसके साथ एक और बुक जो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़ें. इट्स अ वंडरफुल बुक, क्योंकि आपकी जो इंटर तक आप मेरे ख्याल में तो उसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बड़ी कमाल की बुक है. दैट वुड हेल्प यू. इनफैक्ट आजकल जैसे बहुत सारे ट्रेंड्स भी चलते हैं कि भाई डिप्रेशन में इस तरह के इशूज़ हैं, इस तरह के इशूज़ हैं. दैट वुड हेल्प यू टू कॉन्कर the happiness. The Conquest of Happiness is such a book which would also, in fact, I would say it would be a good addition in your book list if you have any. और इसके साथ इस बुक के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें बर्टन रसल की एक्सपर्टीज़ जो हैं, यहाँ पर तो सिर्फ उनको फिलोसफी की बात की जा रही है. मैं समझता हूँ कि he was also one of the finest psychologists as well whenever he used to write on topics like social topics की बात हम जहाँ तक करते हैं. अच्छा जी, ये excerpts. The reawakening of the East is one of those enormous movements that can only be properly understood when viewed in a wide historical perspective. Alternations of power between East and West have occurred throughout the last 2,000 years and more. In the earliest history, the East predominated. ये तो तयशुदा बात है कि जब शुरुआत की बात की जाती है तो मशरिक ने जो है ईस्ट ने वो प्रीडोमिनेट किया, मतलब एक तरह से डोमिनेंट ही थी मगरब के ऊपर. इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल देन द वेस्ट. याद रखिए, बर्टन रसल का ताल्लुक यूरोपियंस के साथ है. इनका ताल्लुक उन्हीं कम्युनिटी, उन्हीं गोरों में से, बट ही एक्सेप्ट्स दिस थिंग. और ये बहुत ही कमाल की बात है कि एक तारीखदान, एक फ़लसफ़ी, एक मैथमेटिशियन, रियाजीदान, एक साइकोलॉजिस्ट जो है इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करे कि इसमें कोई शक नहीं है कि हज़ारों सालों से जो है मशरिक़ ने मगरिब के ऊपर गलबा था मशरिक़ का और वो हावी थे. लेकिन चूँकि जो हालात थे आगे हम जब पढ़ेंगे तो आप मैं और आसानी से एक्सप्लेन भी करता रहूँगा. द वेस्ट however acquired the lead in civilization with the rise of Greece and in power with the conquest of Alexander. सिकंदर आज़म जिनकी हम बात करते हैं, one of those warriors जिन्होंने अपनी कुछ लोग कहते हैं कि एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट तो है उनकी एज में. कुछ लोग कहते हैं 28 साल की उम्र में उन्होंने आधी दुनिया फतह की, कुछ लोग कहते हैं 33 साल की उम्र में. लेकिन उनके मरने की जो बातें हैं, जब वो ही वॉज इंजर्ड, तो कहा जाता है कि सिंध के आसपास से जब वो गुजर रहे थे यहाँ से तो ही वॉज हिट बाय एन एरो. वो कुछ कम्युनिटीज़ थी जो यहाँ पर शिकार करते थे मछेरे, उनके तीर से वो ज़ख्मी हुए थे और उसके बाद ज़ख्मी की ताब ना लाते हुए वापसी जाते हुए वो मारे गए. From that time until the fall of Rome, that is to say for some 7 or 8 centuries, the West was dominant, both in power and in culture. It lost this position through the wars between Romans and Germans. The Germans succeeded in destroying Roman power, but not in acquiring a similar position for themselves. With the West thus enfeebled, कमज़ोर होने के बाद, leadership in power and culture passed to the East. Very large parts of what had been the Roman Empire were conquered by Islam, which in the great days of the Caliphate had an empire considerably larger than that of Rome in its greatest days. जो कि रोम की इंतहाई जो उनका उरूज था उससे भी ज़्यादा इस्लामिक कैलिफेट जो थी वो पावरफुल हो चुकी थी.
The Chinese Empire during the early part of the Tang dynasty was equally glorious and almost equally extensive. The supremacy of the East was not only military but science, philosophy, and poetry, and the arts also flourished in China and the Muhammadan world at a time when Europe was sunk in barbarism. Europeans with unpardonable insularity called this period the Dark Ages. The Dark Ages की जो बात की जाती है, तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बाबा जब whenever you go through history, आप लोग थोड़ा सा आंखें खोलकर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हुए उसको पढ़ा करें। और बुक पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपने ऑथर के साथ, अपने राइटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसके अल्फाजों के साथ आप खुद बात कर रहे होते हैं कि राइटर ऐसा लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, अगर राइटर ने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, अगर राइटर ये कह रहा है तो ये क्यों कह रहा है। इस तरह की जो डिस्कशन का जो मेथड होता है वो ज़रूर अप्लाई किया करें वाइल रीडिंग। But it was only in Europe that it was dark indeed, only in Christian Europe. For Spain, which was Muhammadan, had a brilliant culture. The Western world, however, gradually climbed out of the abyss of barbarism. Columbus and Vasco da Gama were the pioneers of the new Western imperialism. जहाँ तक साम्राज्यवाद की बात है तो वो इसमें कोई शक नहीं है, वेस्ट से ही शुरू हुआ और वेस्ट पर ही खत्म होता है। And scientific technique was its main weapon. The East, which had led the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome, was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century onwards. अच्छा जी, इसके आगे मैं एक वर्ड नहीं पढ़ूंगा। I want you people to read this and then make a summary of it. In fact, summary भी ना बनाए, I would want you people to translate this either in Urdu or in Sindhi so that मैं आप लोगों की language skills के ऊपर भी काम कर सकूँ और देख सकूँ कि you people are in that position कि आप इसको सही से grasp भी करते हैं, सही से comprehend करते हैं, उनको अपने अल्फाज में और अपनी ज़बान में लिख भी सकते हैं। अपनी ज़बान से मुराद either you write it in your national language or in your regional language यानी कि उर्दू या सिंधी। Once you write it, make sure कि आप लोग मुझे Saturday से पहले submit करें so that I am in a position to check it and अपना opinion भी दे सकें। Thank you so much.